Welcome back again, students. Now we'll be solving some problems on periodic functions. Let us take a problem. Say integral part of sine 3x plus modulus of cos 6x. We find the period of this function f of x. So you are knowing this inner function sine 3x का period क्या है? sin x का period you are knowing 2 pi. So sin of ax plus b, some k into sin of ax plus b, you are knowing 2 pi by mod a. In the same way, using the same, what you will be getting here, period of this integral part of sin 3x is 2 pi by 3 and mod of cos x के लिए period pi, लेकिन इधर ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट 6 है, so pi by 6. So it is in the form f1x plus f2x. How will you find the period of fx? LCM of these periods 2 pi by 3 and pi by 6. क्या होता है न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर्स का GCD, that is 2 pi by 3. So this is the period of your function f of x. Now let me solve some more problems. Say f of a or g of x equal to, I am taking half of mod of sin x by cos x plus mod of cos x by sin x so what is the period of this first function? Clearly 2 pi. And the period of this second function also 2 pi. Can we apply LCM rule or half of LCM rule? Let us check. So if you sin x and cos x are complementary functions and also cos x and sin x are complementary functions, but this function is not even, hence you cannot take half of LCM, matlab LCM of 2 pi and 2 pi only. So period of gx is 2 pi only, not pi. Period of gx is 2 pi only. Only LCM of these periods 2 pi and 2 pi, that is 2 pi only. Clear now, students? Next. थोड़ा घुमाने वाले सम्स कर लेते हैं अभी. Say f of x plus f of x plus 4 equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6. Find the period of f of x. ऐसे problems भी पूछते. This type are very frequent in the examinations. Now by inspection you can easily find the period of fx other than plotting graphs and all. So if I am replacing x by x plus 2, what happens? F of x plus 2 and x plus 2 plus 4, f of x plus 6. क्या किया मैंने? x की जगह में x plus 2 रिप्लेस किया, so ये x plus 6 हो जाएगा. इधर ही क्या होगा? x plus 4 and plus f of x plus 8. देख लो अभी इधर ही f of x plus 6, इधर ही f of x plus 6 कैंसिल हो जाएगा and f of x plus 4, इधर ही f of x plus 4 कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या हमको? and f of x plus 2 भी कैंसिल हो जाएगा. fx plus 2 कैंसिल, f of x plus 6 कैंसिल and f of x plus 4 कैंसिल. So बचेगा क्या? इधर ही f of x. If you add and equate both, f of x is equal to क्या हो गया? f of x plus 8. Because here f of x plus 4 left side हो, इधर ही right side हो, दोनों कट हो जाएगा. And similarly f of x plus 6 इधर ही left side, इधर ही right side, and f x plus 2 also कट जाएगा. बचेगा क्या हमको? f of x is equal to f of x plus 8. That means 8 is the period of this function f of x for all x belongs to the domain. So here period of fx is 8. This way we can find the periods in this type of functions.
you can say functional equations. One more problem I'm giving. Say f of x plus lambda equal to 1 plus under root 2fx minus f square x for all x belongs to R. We need to find whether function is periodic. अगर एक periodic है तो period क्या होता है देखेंगे अभी. So f of x plus lambda minus 1, ये 1 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ये 2fx माइनस एफ स्क्वायर एक्स को ऐसा लिखता हूं मैं 1 माइनस fx माइनस 1 होल स्क्वायर लिखता हूं. क्या होता है इधर ही 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस fx स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 2fx इंटू माइनस प्लस 2fx आ जाएगा. ओके राइट. So on squaring f of x plus lambda minus 1 whole square is equal to 1 minus of fx minus 1 whole square. You transfer towards left, f of x plus lambda minus 1 whole square plus f of x minus 1 whole square is equal to 1. Call it relation number 1. Changing x to x plus lambda, what you will be getting? X plus 2 lambda, f of x plus 2 lambda minus 1 whole square, and here changing x to x plus lambda, f of x plus lambda minus 1 whole square equal to 1. On subtraction of these two equations हमको क्या मिलेगा? ये this and this cancel हो जाएगा, this minus this equal to 0. मतलब I'm writing on the top. अभी क्या बचेगा इसमें? f of x plus 2 lambda minus 1 whole square is equal to f of x plus lambda minus 1 whole square. दोनों साइड से स्क्वायर काट दिया तो प्लस आर माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि f of x plus lambda minus 1 equal to square root something दे दिया, so this cannot be negative. So on cancelling that squares, you will be getting directly f of x plus 2 lambda minus 1 equal to f of x minus 1 whole square. So fx minus 1. This minus 1 also gets cancelled. So f of x plus 2 lambda equal to f of x. That proves 2 lambda is the period. 2 lambda is the period of your function f of x. मतलब function is periodic with fundamental period 2 lambda. Next, some more problems using functional equations we will solve. Say f of x minus 1 plus f of x plus 1 equal to root 3 f of x. Find the period of fx. So firstly I'm replacing x by x minus 1. So क्या होता है if I'm changing x to x minus 1? So x minus 1 minus 1, this is x minus 2, and here x minus 1 plus 1, that is f of x equal to root 3 f of x minus 1. Is it clear? Call it relation number 1. Next, changing x to x plus 1. मतलब I am using these two. So those terms f of x minus 1, f of x plus 1 वो इस्तेमाल करने के लिए पहले x की जगह में x minus 1 और सेकेंडली x की जगह में x plus 1 रिप्लेस कर रहा है. अभी क्या होता है बोलिए? सो x plus 1 minus 1 मतलब f of x. हियर क्या होता है? x plus 1 plus 1, that is f of x plus 2 is equal to root 3 into f of x plus 1. This is your second relation. Adding these two, fx plus fx, 2 f of x plus f of x plus 2
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, राइट साइड में रूट थ्री कॉमन करो, रूट थ्री कॉमन करने से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, उसका वैल्यू हमारे पास है रूट थ्री एफ एक्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एफ एक्स, थ्री एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया मैंने। उसके बाद भी एक डायरेक्ट स्टेप लिखता हूं, थ्री एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस टू, इधर बचा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स आ गया। नाउ चेंजिंग एक्स टू एक्स प्लस टू, व्हाट यू विल बी गेटिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, here x plus 2 minus 2, that is plus f of x is equal to f of x plus 2. So combining these equations, these two, देख लो अभी fx इधर ही कट हो गया और f of x plus 2 कट हो गया, इधर f of x दोनों साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एंड f of x plus 2 लेफ्ट साइड राइट साइड, ये भी कट हो गया। बचेगा क्या हमको, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, थोड़ा घुमाना पड़ता है। नाउ आई एम चेंजिंग x टू x प्लस सिक्स, सो क्या होगा, if I am changing x to x plus 6 plus 4, that is x plus 10, here क्या होगा, f of x plus 4 हो जाएगा, right, but f of x plus 4 क्या होगा, minus of f of x minus 2, or f of x plus 10 is equal to minus of f of x minus 2, और वो साइड माइनस किया तो दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस टू, माइनस कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू आ जाएगा। नाउ चेंजिंग एक्स टू एक्स प्लस टू, मतलब एक्स की जगह में एक्स प्लस टू रिप्लेस किया तो अभी क्या मिलेगा हमको, एक्स प्लस टू प्लस 10, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस टू, दैट इज एफ ऑफ एक्स। Therefore fx is a periodic function with period 12. This way we can solve the functions which are expressed in terms of functional equations. Now और एक प्रॉब्लम कर सकते हैं ना, okay, so look at this, bracket x plus 1 by 3, a function g of x I am giving, plus bracket x plus 2 by 3 minus 3x plus 10. We need to find the period of this function. We have a standard result, bracket x, bracket of x plus 1 by n, 2 by n, 3 by n up to n minus 1 by n is equal to integral part of nx. We have a standard result that हमने 11th क्लास में सीख लिया. So integral part of x, the x plus 1 by 3 integral part of x plus 2 by 3 कितना होगा, बोलना, integral part of 3x from your 11th knowledge. So replacing this value here, so integral part of 3x minus 3x, अभी मैं एक माइनस कॉमन करता हूँ, 3x minus integral part of 3x, right, plus 10. So any real number x minus bracket x is brace x, so minus brace of 3x you will get plus 10. You are already knowing brace x का period 1, लेकिन इधर ही variable का quotient 3, so 1 by 3 is the period. This constant does not matter for anything. So period of gx is 1 by 3.